पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल। सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। भारत में क्रिकेट इतना फेमस है कि लोगों का ध्यान किसी दूसरे खेल की तरफ जाता ही नहीं। आज हम आपकी जानकारी के लिए मेजर ध्यानचंद के बारे में बताएंगे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वह रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इनके साथियों ने इनके पीछे चंद लगा दिया। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन वे भारतीय सेना में मेजर के पद तक गए। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। इस शक के साथ कहीं स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में नहीं, ध्यानचंद के हाथों में था। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वह पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, वह वाकई कम थी। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में एक हॉकी मैच देखने के बाद कहा था, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनता है। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने खेल में माहिर ये दोनों हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया था। इससे मेजर का एक दांत टूट गया था। जब बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी खेल रही थी तो हिटलर भी इस मैच को देख रहा था। हिटलर इस मैच को देखकर मेजर ध्यानचंद से बहुत प्रभावित हुआ और मेजर साहब को मिलने के लिए बुलाया। हिटलर ने मेजर को कहा, जब हॉकी नहीं खेलते तो क्या करते हो? मेजर ने कहा, मैं आर्मी में मेजर हूँ। हिटलर ने कहा, हमारे देश के लिए खेलो, जर्मन आर्मी में मार्शल बना दूंगा। तो मेजर ने कहा, मेरा देश भारत है और मैं वहीं खुश हूँ। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में ब्रैडमैन और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली के बराबर का दर्जा दिया गया है। ध्यानचंद ने वर्ष 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मेजर से जब आखिरी पलों में डॉक्टर ने पूछा कि भारतीय हॉकी का भविष्य क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, भारत में हॉकी खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो कोमा में चले गए और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। In 40s then, he still managed to score 61 goals in 22 matches. His legacy continued until he decided to phase out his involvement in series hockey in 1948. In 1956, at the age of 51, he retired from the army with the rank of major. The government of India honored him the same year by giving the Padma Bhushan, India's third highest civilian honor. His birthday, 29th August, is celebrated as National Sports Day in India. India's highest award of lifetime achievement in sports is the Dhyan Chand Award, which has been awarded annually from 2002 to sporting figures who not only contributed through their performance but also contributed to the sport after their retirement. The National Stadium in Delhi was renamed Dhyan Chand Stadium in 2002 in his honor.
In his 22 years career, he scored over 400 international goals. Once, while playing a hockey game, he was not able to score a goal against the opposition team. After several misses, he argued with the match referee regarding the measurement of the goalpost. And amazingly, it was found not to be equal to the official width of a goalpost under international rules. You can understand how big a sportsman he was. Australian cricket legend Don Bradman was a great fan of Dhyan Chand. After watching him in action, Bradman remarked, "He scores goals like runs in cricket." But even after achieving so much, he was such a down-to-earth person. He used to address a Baton Cup match between Jhansi Heroes and Calcutta Customs Club as the best match he ever played. He used to love watching Hindi movies. Whenever he would get time, he used to go out with his friends in the evening. He used to love cooking too. His favorite dish was rabri, as said by one of his sons, Ashok Kumar Singh, who himself was a hockey player. He always used to teach his children not to leave anything unfinished. Even in his last days, Dhyan Chand could not help talking about hockey. He reminded his family to take care of his medals and make sure no one came into his room and stole them. He was died on December 3, 1979. Once, a statue of Dhyan Chand in action was installed at the Jhansi Heroes ground. The words written under it, "National Pride, Hockey Wizard, Major Dhyan Chand." Hello my dear students, I hope you are all keeping well and fit. We, your teachers at Manovikas, are back again with another virtual assembly on the occasion of National Sports Day. National Sports Day is celebrated on the 29th of August every year. It commemorates the birth anniversary of Major Dhyan Chand, the hockey wizard. On this auspicious day, prestigious awards are given away by the Government of India to the sports talent of India. Some of these include the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, the Arjuna Award, the Dronacharya Award, and so on. Dhyan Chand Award is given to a person for his lifetime achievement in the field of sports. Students, National Sports Day is an important day. It's a red letter day on the yearly calendar. I'll tell you the reason why. Sports are one of the most important activity every person should practice and make it a part of their daily lives. Let us celebrate National Sports Day every day. Choose a game or a sport of your choice, practice it, learn the rules, learn the regulations, and play it for the fun of playing. Yes, sports involve a bit of competition, but they also involve cooperation, they involve team building. You learn to sacrifice for others for the sake of the spirit of the game. It makes us all better people in life. Everyone must practice a sport of some kind. Now, having said that, I'll tell you that during this lockdown period, yes, I agree, we cannot play contact games. Games which we need to touch each other, we need to be in contact with each other. But then there are many things that we can do to keep ourselves fit. More in these times when we are separated from our peers, from our friends, we have to be in touch with some game or sports. Now in school, PT teachers and the other teachers are all the time creating some activity for you all which you can utilize to keep yourself fit at home. Involve your family members. Get together and practice some kind of a game or sport which doesn't involve any touch or contact. Here in school, we have been doing Zumba, we have been doing yoga. PT teachers have put up for you all many videos which you can utilize. I'm sure children, you will enjoy these videos along with your families. Tell your friends to be involved in some kind of a game. Mind games also can be used like chess and other things which will help you to be more thinking, more analytical and help you to deal with various issues in your life. They'll equip you for the future.
So have a great sporting year ahead, a sporting year which has less contact and more of fitness in it. So God bless each one of you. Do well in this year. Wishing you all a very happy National Sports Day 2020. Taking part in sports is great for health and fitness at any age. Yet, there are specific benefits when you start young. Competing in team sports helps children develop mental agility, fosters social skills, and makes them accountable for their action. It doesn't matter if you win or lose, as long as the child has fun. Hope to see many of our children participate actively in sport activities. Hello everybody. Today we are celebrating National Sports Day 2020 and we teachers have all got together to do the Zumba. Zumba is a fun, effective dance workout designed as a combination of salsa and aerobics. It is a full body workout. So come on children, dance along and have fun. Thank you. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमो
Move back. Put your leg like this, cross. Push, guard.